हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। हमारे आज के क्विज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके पोर्शन एंड यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन इन एसएससी यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. This is the part 1 of the video because it is difficult to cover all the books and their authors in a single video, so this particular video will come in parts. So let us begin with the questions, and do watch this video till the end because it is filled with a lot of important information and important questions. Let us begin with the question 1. Modi at 20 Dreams Meet Delivery. पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of the book Modi at 20 Dreams Meet Delivery? All the given options are the authors of this book. In fact, this book is written by 22 intellectuals and eminent citizens of the country, which includes P.V. Sindhu, Shobna Kamineni, Surjit Bhalla, Amish Tripathi, Amit Shah, Pradeep Gupta, Anant Nageshwaran, Arvind Panagriya, Shamika Ravi, Uday S. Kotak, Ajay Mathur, Anupam Kher, Ashok Gulati, Dr. Devi Shetty, Nandan Nilekani, Indripendra Misra, Sadhguru, Sudha Murthy, Ajit Doval, Manoj Ladwa, Bharat Barai, and Dr. S.J. Shankar. So these are the 22 people who have contributed to this book. And what is this book about? This book is based on 20 years journey of our Prime Minister Shri Narendra Modi as the head of the government, from becoming Chief Minister of Gujarat in 2001 to being elected as Prime Minister of India in 2014 and re-elected in 2019. And this book was released on May 11, 2022. Police and Security Yearbook 2010 to 2011. पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of the book Police and Security Yearbook 2010 to 2011? अजीत डोवाल एक आईपीएस ऑफिसर है और अभी हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं. उन्होंने ये बुक विद बी आर लाल, एक दूसरा आईएएस ऑफिसर, उनके साथ लिखी है. सो सम इंफॉर्मेशन. Shri Ajit Kumar Doval is the National Security Advisor in the Government of India. He is the National Security Advisor to the Prime Minister Narendra Modi, and he was an IB chief and IPS officer from Kerala cadre. India and Asian Geopolitics, The Past, Present. पुस्तक किसने लिखी है? Who authored the book India and Asian Geopolitics, The Past, Present? ये बुक श्री शिवशंकर मेनन ने लिखी है. शिवशंकर मेनन हमारे एक इंडियन डिप्लोमैट है. He served as the National Security Advisor when Prime Minister was मनमोहन सिंह. तो उनके टाइम में he was the National Security Advisor, Shivshankar Menon. He had previously served as the Foreign Secretary in the Ministry of External Affairs, and prior to that he was Indian High Commissioner to Pakistan, Sri Lanka, and Ambassador to China and Israel. और ये बुक उन्होंने लिखी थी 2021 में. ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? The book Train to Pakistan is authored by, this is an important question and this is an old book, and this was written by खुशवंत सिंह. उनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट बुक जो काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में पूछी भी गई है, ट्रेन टू पाकिस्तान. सो हु वाज खुशवंत सिंह? खुशवंत सिंह इंडिया के एक एक्नॉलेज्ड कॉलम राइटर एंड नॉवेलिस्ट रहे हैं, and he was the founder editor of Yojana, एक न्यूज़पेपर था. He had served as the editor of Hindustan Times, National Herald, and the Illustrated Weekly of India. So he is a journalist and a writer. उन्होंने ये बुक लिखी थी.
द सैटेनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखी है? Who wrote the book Satanic Verses? This is also an important book. And the author of this book is Salman Rushdie. उन्होंने ये बुक लिखी है The Satanic Verses. The Hungry Tides बुक किन्होंने लिखी है? This book is written by Amitav Ghosh. Actually, there are many important books by many important authors. So just let us take a look at that. Some of the very important books that are written by Rabindranath Tagore. ये सारे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉपुलर ऑथर्स हैं इंडिया के और उनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं उनके नाम आपको जानना ज़रूरी है बिकॉज दीज कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स. ओके, सो रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स थी. काबुली वाला, ये बुक, ये स्टोरी इनफैक्ट आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी. काबुली वाला, देन गीतांजलि, नेशनलिज्म, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, द किंग ऑफ द डार्क चेम्बर, द हंग्री स्टोन्स, The Gardener, The Fugitive, The Crescent Moon, The Cycle of Spring. These are some of the important books that were written by Rabindranath Tagore. बंकिम चंद्र चटर्जी, उनकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं. वंदे मातरम, आनंद मठ, ये इम्पोर्टेंट, इन्होंने जो हमारा नेशनल सॉन्ग भी लिखा है. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है. बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा है वंदे मातरम. सो आनंद मठ, वंदे मातरम, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, द पॉइजन ट्री, देवी चौधरानी, मृणालिनी, राजमोहन्स वाइफ, बिशप रिक्शा, चंद्रशेखर, सीताराम, ये कुछ, दीज आर सम ऑफ द वर्क्स बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने जो बुक्स लिखी है उनका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, चाइना, स्पेन एंड द वॉर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड देयर इफेक्ट्स. ये जो बुक्स हैं ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हैं और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में. सो प्लीज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिमेंबर दीज. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज डॉटर इंदिरा गांधी, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, द नेम्स आर, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स आर एटर्नल इंडिया, पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स, माई ट्रूथ. माई ट्रूथ इज़ अ ऑटोबायोग्राफी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, हमारे भारत के, उन्होंने बुक्स लिखी ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स. उनकी बुक, किताब का नाम था ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ही वॉज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट. उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं एंड दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स एज वेल, सो प्लीज रिमेंबर. इंडिया 2020, A Vision for the New Millennium, Wings of Fire, an autobiography, Ignited Minds, Unleashing the Power Within India, The Luminous Sparks, a biography in words and colors, Guiding Souls, Dialogues on the Purpose of Life, Mission India, A Vision of Indian Youth, You Are Born to Blossom, टेक माई जर्नी बियॉन्ड. ये जो कुछ बुक्स हैं ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हैं और दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बुक्स दैट यू मस्ट रिमेंबर. महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, द नेम्स आर हिंद स्वराज, ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन होम रूल, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज हिज ऑटोबायोग्राफी, द वे टू गॉड, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, Pathways to Non-Violent Resistance. These are the books written by Mahatma Gandhi. दलाई लामा, जो तिब्बत से एग्जाइल होकर के इंडिया में रहते हैं,
His book is The Little Book of Encouragement, one of the important books written by him. Salman Khurshid, he was a politician, he was a member of Congress. He has written a book on Triple Talaq, Examining Faith. रघुराम राजन, जो फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं, उनकी एक बुक है फॉल्ट लाइन्स, हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी. मार्क टुली एक जर्नलिस्ट थे, द फॉर्मर ब्यूरो चीफ ऑफ BBC. He has written a book, No Full Stops in India. This is one of his books, one of the important books, No Full Stops in India. Barack Obama, though we have mentioned mainly the books written by Indians, Dalai Lama, Barack Obama, these are some important people whose books also we have to remember. The book one of the books written by Barack Obama is The Audacity of Hope, Thoughts on Reclaiming the American Dream. R.K. Narayan, हम सबके he wrote Malgudi Days. We all know his work, we have seen it on TV. Some of his books were Waiting for the Mahatma, Swami and His Friends, The Guide, Vendor of Sweets, Malgudi Days. So this should not be very difficult to remember. Then there are books by Mulk Raj Anand, Untouchable, The Private Life on an Indian Prince. प्रणब मुखर्जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, उन्होंने बुक लिखी है द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन, एंड अनदर बुक इज द कांग्रेस. अरुंधति रॉय, उन्होंने बुक लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन. विक्रम सेठ, his book is A Suitable Boy and Equal Music. These are two books. A Suitable Boy, this question has also come in SSC 2023 exam. Jhumpa Lahiri, a very well-known Indian author. Some of her important books are The Namesake, Interpreter of Maladies, The Lowland, Unaccustomed Earth, Whereabouts. Then we have books written by Kamla Markandeya, Nectar in a Sieve. This is an important book. Salman Rushdie, his very important book is Midnight's Children and The Satanic Verses, which we have already discussed about. Another important author of India is Amitav Ghosh, and the books written by him are Shadow Lines, The Hungry Tide, The Glass Palace. V.S. Naipaul, he is also a very popular author, and he has written books India, A Million Mutinies, A Bend in the River, A House for Mr. Biswas. Arvind Adiga, he is an important author. The White Tiger is the book written by him. Arun Shourie, he has been the editor of Times of India. He is a journalist, has been the editor of Times of India, Indian Express and all that. So he has written a book, Does He Know a Mother's Heart? Ramchandra Guha, his book is India After Gandhi, an important book. Shashi Tharoor, he is a member of parliament. He is a member of Indian National Congress. He has written a lot of books. Some of the important books are The Great Indian Novel, Why I Am a Hindu, An Era of Darkness. Before we finish this quiz, before we come to the end, I want you to answer one question. There's a book, Why Bharat Matters. Who's the author of this book? So answer for this you tell in the comment box. And with this we have come to the end of this quiz. Hope you got to learn something. Please like, share and subscribe to this channel for more such content. Part 2 of this series will be Books and Authors, wherein we will talk about sports persons who have written their autobiographies and their books. Okay, so hope you like this quiz. Thank you for watching. See you again.